गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा अभी यश जी ने कहा कि मैं वासुकी सूत्रधार का किरदार कर रहा हूँ इसमें। सूत्रधार, और युवराज जी ने मुझे परसों नरसों जब मैं शूट कर रहा था कहा था कि कभी मैं भीष्म बन जाऊंगा, कभी कृष्ण बन जाऊंगा, तो अर्जुन के साथ मैं हमेशा रहूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शंकरचूड़ में प्ले कर रहा हूँ। दरअसल ये जब मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, इस रोल के लिए कॉल आया था, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव था कि यार मैं नेगेटिव रोल कैसे प्ले करूंगा। अब तक तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस गया, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर का विजन एकदम क्लियर होता है। मतलब 15 मिनट्स और मैं कन्विंस हो गया। मतलब कहते हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में एक जड़ जो होती है, जो उन्हें मिलाने से रोकती है, वो है शंकरचूड़। तो बहुत सारी चीजें करेगा और आई एम रियली थैंकफुल यश सर कि आपने मुझे इस रोल के लिए चूज किया। स्पेशली नेगेटिव विजन जो आपका है, जो मैंने आज तक विजन नहीं किया था, वो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम निकितिन धीर है और इस शो में मैं अस्तिका का किरदार निभा रहा हूँ। अस्तिका एक वॉरियर है और उसकी जर्नी, जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा, बहुत पौराणिक जर्नी है और वो कैसे इस युग में आता है। और मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में आए लोग को तंग करने हूँ, तो यहाँ पे सबको तंग करूंगा। एंड विद यस आई वाज सपोज टू स्टार्ट समथिंग फ्यू इयर्स अगो टेलीविजन पर, लेकिन वो हुआ नहीं। और आई एम वेरी थैंकफुल कि जब मेरी टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई है वो इनके साथ हुई है। And the team we have, Glenn Ankush and Yuvraj sir, all of us, I think we are equally passionate और हम यही चाहते हैं कि हम आपको A grade मनोरंजन दें। And I really am waiting for you all to watch this on 30th May. Hi guys, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है। वो जितना सीधा है उसमें मैं उतना ही नौटंकी हूँ, आलसी, निठल्ला, नालायक टाइप का हूँ। वो जितना सीरियस है मैं उतना ही एंटरटेनिंग और चुलबुला कैरेक्टर हूँ। सो दैट्स अबाउट मी। हाय, गुड इवनिंग। थैंक्स युवराज, यश, ममता, for giving us this opportunity, because from time onwards, we always see whatever is for. Thanks, Yuvraj, Yash, Mamta, for giving us this opportunity, because from time onwards, we always see whatever is foreign is good. And it's great that they dug out this chapter which is not known and to put it in this 2 layers or 2 worlds. It's difficult, but what is life without a challenge? And when you have a big vision, you need big money, and thanks. So they didn't hesitate to, work on the costume, the cast, the technician, the locations that we went. I mean, beyond dreams. Hopefully we'll take this beyond other dreams. Thanks for this opportunity. It is very easy to sit in one room and write something, think something, write something. But it is something, an incredible experience when you actually see those characters and the story come alive on screen. So thank you very much. What I'm seeing on screen, I don't think we imagined it to that well. But we are very, very happy the way it is coming out on screen. See, we have been thinking about that, how do we break new grounds? I mean, the last time we did that was actually with Mahadev, where we tried to present a mythological show in a very new manner, which was the first time on Indian television, which became sort of, so to say, a formula which has been followed by others. On this show, we are at a conceptually and at a production level, we are actually trying to break another new ground. We are very hopeful that we have been able to achieve it. You will have to start watching from 30th May, and I think you will understand whether we have been able to pull it off or not. Thank you again, and thank you all of you for coming over here. Thank you.
request all the electronic media to kindly come ahead for the Janta Bites. And done. Well, so thank you so much. And Actually, I haven't done much work in the South. I've only done one film in which it was actually a two-hero film. As far as this choosing this and going for this, I've said it earlier also, and I'll say it again. Though my background is films, working on this film, the whole setup and the whole approach is no different from films. From technical aspect, as well as the actors, as well as the professionalism, everything. So, and I always believe that an actor is never bigger than the medium, be it radio, stage, TV, movies, it's all the same. I think the approach has to be right. Did you prepare in any way for this role? I actually, last couple of films I did didn't require me to be really physical. This role is very physical that I'm approaching. And so I went back to my fighting roots for a while. And yeah, I just prepared on that front. In this role? Not for acting, but on life I do. I think I've been raised in a very different way. We all are very independent. But yes, he's my father, so I always look up to him in more ways than one. First of all, congratulations to the team. The trailer is fantastic, no doubt. But my question to the producer and the director is that why is that another show on